हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका। कुछ रिसेंट अभी 2 3 4 दिन पहले डिरेलमेंट्स हुई हैं। हालांकि दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉज, बट फील्ड में जो हमारे इंजीनियर्स हैं अभी भी थोड़ी सी जो चीज की कमी मैं महसूस किया हूँ। आई थॉट कि आई गिव सम वेरी क्विक फिक्स टाइप ऑफ टिप्स, ताकि हमारे भाई लोग जो हैं, our fellow engineers, they do not get any problem as far as recording of parameters is concerned. अभी recent 4 derailment है which I can tell you about. I had seen a critical parameters revealing the clearance is mostly out of range as far as center pivot is concerned, and these derailments are occurring either on crossover, yeah, turnouts, yeah, just wherever there is a change of angle. You can say traveling from switch onwards towards the heel. So that means there is a rotational resistance for the trolley to adapt to the curvature. मतलब वो ट्रॉली उस कर्वेचर के हिसाब से मुड़ नहीं सकती बिकॉज ऑफ either the clearances or the obstruction of rotation. अब जो हमारा परफॉर्मा है एक्सीडेंट मेजरमेंट का, ये तो आप मान के चलो, ये इसको जब तक हम सुधारेंगे नहीं एक्सीडेंट रुकने वाले नहीं, बिकॉज ये एक साइड को पूरा प्रोटेक्ट करके चलता है कि इतने ही मेजरमेंट हम देंगे, इससे ज्यादा हम देंगे नहीं. दैट इज अ बिग हिंड्रेंस इन द वे ऑफ फेयर एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सेफ्टी पैरामीटर्स which are leading or may be leading to the derailment. क्योंकि whatever I talk, I always talk on the basis of what I get. अभी एक recent नॉर्दर्न का ही derailment था, मैं डिवीजन थोड़ा सा छुपा लेता हूँ. उसकी इतनी मतलब क्लियरेंसेस कम थी पिवट में कि it had a eccentric wear. I'll be illustrating in this video also what I have found here. But then दिस इज ए जनरल डिस्क्रिप्शन जो हमारे फील्ड इंजीनियर्स की जानकारी के लिए मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा कि हम फील्ड में कैसे कर सकते हैं. क्योंकि जो हमारा कॉलम है, रेलिवेंट कॉलम है, उसमें लिखा है कंडीशन ऑफ पिवट वियर, तो हम आंख से देख के कैसे बताएंगे? वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज worn out or not just by seeing with the naked eye. And so I thought of let me make some sort of small, very short video to illustrate what I want to say exactly. And this is a very, very, unique method, very simple method by which we can have the measurement and we can conclude and put pressure for a thorough measurement. Now, what's that? Now, see, this is the top portion. This is attached with the body. This is the bottom portion of the pivot, and this is on the bolster. So this portion rests in this portion, and this is the pin spigot hole. Right? Now see, if we see this, we can very well find from the photo itself that this wall thickness is quite less than this thickness. And here this wear of the liner shows eccentric wear. So first is this thickness of wall. If we see, we can find out. Even the liner has worn out. इसमें होता है क्या, जैसे 8 mm thick liner to protect the parent body. ये parent body और ये इसमें एक liner होता है, यहाँ में ये देखिए weld किया होता है. This portion, top portion rests on this. और ये bottom liner है, circular liner, ये भी 8 mm का है, right? ये इसमें आके बैठता है, फिट होता है, और नीचे ये पिवट जब जाती है तो इसमें यहाँ क्वार्टर लग जाती है.
अब हमको करना है क्या, ये मेरे को किसी ने ना आज फोटो भेज दी कि साहब ये पिवट की फोटो, मैंने कहा इसको यार मैंने क्या करना पहले बताओ, व्हाट विल आई डू विद इट एक्सेप्ट सीइंग इट विजुअली कि यस वन वॉल थिकनेस इज लेस ऑन अदर साइड देन अदर साइड, तो इसके सिवा मैं क्या देख सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं देख सकता। तो व्हाट टू डू इज, ऐसे जब हमको कंडीशन मिलती है तो व्हाट वी कैन डू, सीधा पकड़ो इसका भी यहाँ से डायमीटर मापो, तो दिस इज द डायमीटर ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ द पिवट, और यहाँ में आ जाओ, ये बॉटम का जो है ये डाया माप लो, और ये इसका जो है डाया बॉटम आ गया। नाउ डी बॉटम माइनस डी टॉप, सो ये इसके क्लियरेंस आ गई। स्टैंडर्ड है 3, मतलब इसमें 6 mm का फर्क है स्टैंडर्ड में, स्टैंडर्ड ड्राइंग में, मैं ड्राइंग आपको दे रहा हूँ नेक्स्ट में। और ये कॉर्नर और ये कॉर्नर में 3, और वो जो बोलते हैं ना कि 7 mm, तो 4 mm इज द वियर, 4 mm इज द वियर परमिसिबल, तो 3 + 4 कितनी होगी 7, तो 7 अगर उसमें 4 mm का अगर चला जाता है उसका लाइनर, then it is worn out. So 4 mm is the ultimate wear, both vertical and lateral. This is the drawing partner. Anyone requiring can call me to have a direct sheet of this drawing, and they can keep it for their reference whenever they need it. And this is what I wanted to show about small things which matter to us too much in making out, because this accident performance certainly needs a thorough revision, not revision, a thorough revision if we want to stop the accidents. Otherwise, we can't stop. We don't have access to these parameters. That's why we cannot point out these defects. Keep on moving, derailing. वो जहाँ एक रेल टूटी हुई मिल गई प्राइमर पे से ठड़ाक के रेल फ्रैक्चर. This has to be stopped. And never mind, every sunset has a sunrise. कभी तो ये परफॉर्मर रिवाइज होगा. Well, this was all from my desk for my views. A very small tip about how to measure it in the field. And once you have this measurement with you, then you can very strongly put forth your point that this pivot is okay or this is okay. धन्यवाद, नमस्कार. इन्हीं शब्दों के साथ गुस्ताखी माफ. This is aimed at only and only for the purpose of knowledge sharing, not aimed at any particular department or individual. Thank you.